एक शांत, पेड़ों से घिरी गली में जयपुर शहर में शर्मा परिवार रहता था। श्री सुरेश शर्मा एक मेहनती अकाउंटेंट थे जो सरकारी दफ्तर में काम करते थे, और उनकी पत्नी श्रीमती मीना शर्मा एक गृहिणी थीं जिनकी दुनिया उनके परिवार के इर्द गिर्द ही घूमती थी। उनकी जिंदगी बहुत ही साधारण थी, जिसमें साझा भोजन और शांत शामों की गर्माहट शामिल थी। उनके जीवन का केंद्र, उनकी आंखों का तारा, उनका इकलौता बेटा रोहन था। रोहन कई सालों की दुआओं और इंतजार के बाद पैदा हुआ था, और उनके माता पिता के लिए वह किसी चमत्कार से कम नहीं था। वे उसकी चमकती, शरारती आंखों में अपनी पूरी दुनिया देखते थे और मानते थे कि वह जरूर कुछ बड़ा करेगा। उसके हर छोटे छोटे पल, हर किलकारी, हर कदम को उनके साधारण से घर में बहुत ही खुशी और उत्साह के साथ मनाया जाता था। रोहन के आते ही उसे एक छोटे राजकुमार की तरह पाला गया। उसकी हर इच्छा उसके माता पिता का हुक्म बन जाती थी। अगर वह खिलौने के लिए रोता तो बाजार से सबसे अच्छा खिलौना उसके सामने आ जाता। अगर वह सब्जियां खाने से मना करता तो चॉकलेट की एक बार जादू की तरह उसकी प्लेट में आ जाती। उसके दादा दादी जो उनके साथ ही रहते थे, वे भी उसी तरह उसके दीवाने थे। उसकी दादी अक्सर कहती, यह हमारा छोटा कृष्णा है, इसे शरारत करने दो। वे उसे इतनी मोहब्बत देते थे कि उसके शब्दकोश में ना शब्द लगभग नहीं था। उन्हें लगता था कि उसे सब कुछ देना ही असली प्यार है, अपने खुद के साधारण बचपन की भरपाई करने का तरीका है, ताकि उनका प्यारा बेटा कभी किसी कमी या दुख का एहसास न करे। पड़ोसी अक्सर कभी जलन से और कभी चिंता से कहते, शर्मा जी, आपने तो अपने बेटे को बहुत बिगाड़ दिया है। शर्मा जी बस मुस्कुराकर जवाब देते, अरे हमारा एक ही तो है, अगर हम नहीं लाड़ प्यार करेंगे तो कौन करेगा? बच्चा है, बड़ा होते होते सब सीख जाएगा। यही सोच उनके पालन पोषण का आधार बन गई थी। वे उसकी जिद को अनुशासनहीनता की बजाय मजबूत इच्छा शक्ति समझते थे और उसकी मांगों को महत्वाकांक्षा मानते थे। वे रोहन के लिए एक ऐसी दुनिया बना रहे थे जिसमें प्यार तो बहुत था, लेकिन सीमाएं, जिम्मेदारियां या परिणामों की समझ नहीं थी। इस बिना शर्त लाड़ प्यार के खोल ने रोहन को एक खुश मिजाज और बेफिक्र बच्चा तो बना दिया, लेकिन साथ ही एक समस्या की नींव भी रख दी। उसे कभी किसी चीज के लिए इंतजार नहीं करना पड़ा। उसे कभी अपने खिलौने साझा करने या यह समझने की जरूरत ही नहीं पड़ी कि कोई और बच्चा क्यों रो रहा है। उसकी दुनिया बस उसी की खुशी और सहूलियत के लिए बनी थी। उसके माता पिता अपने गहरे प्यार में अंधे होकर यह नहीं देख पाए कि वे उसे सिर्फ मुश्किलों से नहीं बचा रहे थे, बल्कि उसे उन जरूरी सबकों से भी दूर रख रहे थे जो इनकार, सब्र और मेहनत से मिलते हैं। वे एक ऐसे बच्चे की परवरिश कर रहे थे जो बहुत प्यार से पला था, लेकिन उस दुनिया के लिए तैयार नहीं हो रहा था जो उसके घर की चारदीवारी के बाहर थी। जैसे जैसे रोहन शिशु से बड़ा होकर एक छोटा लड़का बना, लाड़ प्यार का ये सिलसिला और गहरा होता गया। मोहल्ले के पार्क में हर छोटी मोटी लड़ाई के बाद उसके माता पिता हमेशा उसी का पक्ष लेते, चाहे वह सही हो या गलत। अगर कोई और बच्चा शिकायत करता कि रोहन ने उसका खिलौना छीन लिया, तो श्रीमती शर्मा दूसरे बच्चे को प्यार से मिठाई दे देती और रोहन से कहती, कोई बात नहीं मेरे बहादुर बेटे, तुम खेलो। उन्होंने कभी उसे माफी जैसे आसान लेकिन गहरे शब्द नहीं सिखाए। वे दूसरों के सामने उसे टोकना अपने परिवार का अपमान मानती थीं, जैसे मानो यह उनकी नाकामी का इजहार हो। उनका प्यार एक मजबूत ढाल बन गया था जो रोहन को किसी भी आलोचना या जिम्मेदारी से बचाता था। उसकी हर मांग, चाहे कितनी भी गैर मुनासिब क्यों न हो, बिना सवाल पूरी की जाती थी। जब उसने एक महंगा वीडियो गेम कंसोल मांगा जो उनके बजट से बहुत बाहर था, तो शर्मा जी ने बिना सोचे समझे अपनी बचत तोड़ दी। उसकी खुशी किसी भी पैसे से ज्यादा कीमती है, वे अपनी पत्नी से कहते। मीना बदले में घंटों उसके पसंदीदा खाने बनाती, भले ही उसे एक साथ 3 अलग अलग डिश बनानी पड़े, क्योंकि रोहन की पसंद हर वक्त बदलती रहती थी। वे उसके बिखरे कमरे, चीजें इधर उधर छोड़ने की आदत और घर के किसी भी काम में मदद न करने को नजरअंदाज कर देते थे। वे खुद से कहते, ये सब छोटी बातें हैं, अपने प्यारे बेटे को परेशान करने लायक नहीं। उसका काम था बस पढ़ना और खेलना। इस लगातार लाड प्यार ने रोहन में एक तरह का हकदारी का भाव पैदा कर दिया।
उसे लगने लगा कि वह खास है और जो नियम बाकी बच्चों पर लागू होते हैं वे उस पर नहीं होते। वह बड़ों से बहस करने लगा, मासूमियत से नहीं बल्कि उस घमंड के साथ कि उसे कभी डांट नहीं पड़ेगी। जब उसकी दादी उससे टीवी की आवाज कम करने को कहती तो वह जवाब देता, ये मेरा घर है, मैं जैसा चाहूं करूंगा। दादा दादी एक दूसरे की तरफ चिंता से देखते, लेकिन मीना और सुरेश तुरंत बीच में आकर कहते, बच्चा है, बड़ा होते होते समझ जाएगा। वे मानते थे कि वे सबसे अच्छे माता पिता हैं। उनका प्यार सच्चा था, लेकिन उसे जताने का तरीका गलत था। उसे सब कुछ देकर वे अनजाने में उसे यह सिखा रहे थे कि किसी भी चीज के लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं है। उसकी गलतियों के नतीजे कभी न भुगतने देकर वे उसे यह सिखा रहे थे कि हर काम के परिणाम नहीं होते। वे उसके वर्तमान को खुश रखने में इतने लगे थे कि माता पिता की असली जिम्मेदारी यानी उसे भविष्य के लिए तैयार करना भूल गए थे। लाड प्यार के बीज जो बहुत अच्छे इरादों और बिना शर्त मोहब्बत से बोए गए थे, अब गैर जिम्मेदारी और बेअदबी के पेड़ में बदलने लगे थे और शर्मा परिवार को इसकी परछाई का जरा भी एहसास नहीं था। जब रोहन मिडिल स्कूल पहुंचा तो उसके पालन पोषण के नतीजे अब घर की दयालु दीवारों के बाहर छुपाए नहीं छुप सकते थे। स्कूल में वह राजकुमार नहीं था जो घर पर था। वहां वह बस एक और छात्र था जिससे नियम मानने, शिक्षकों का सम्मान करने और समय पर काम पूरा करने की उम्मीद थी। ये एक ऐसी दुनिया थी जिसके लिए रोहन तैयार नहीं था और जिसे वह पसंद भी नहीं करता था। वह कक्षा में बैठना मुश्किल पाता, अक्सर दूसरों को अपनी बातें या डेस्क के नीचे मोबाइल पर गेम खेलकर परेशान करता। उसे होमवर्क जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक नाइंसाफी लगती थी। मैं अपना वक्त निबंध लिखने में क्यों बर्बाद करूं जब मैं दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल सकता हूं। उसकी कक्षा में हरकतें दिन ब दिन बिगड़ती गईं। वह अक्सर देर से आता, उसकी यूनिफॉर्म अस्त व्यस्त होती और स्कूल बैग अधूरा रहता। जब शिक्षक उससे होमवर्क मांगते तो वह कभी अचानक बीमारी तो कभी पारिवारिक इमरजेंसी जैसी बहानेबाजी करता, वो भी इतनी मासूमियत के साथ जो उसने सालों में सीख ली थी। वह अपने सहपाठियों के साथ भी वही रवैया दिखाता जो घर में था। उन्हें जो मेहनत करते नर्ड कहकर चिढ़ाता। उसे लगता लोकप्रिय और चालाक होना मेहनती और ईमानदार होने से ज्यादा जरूरी है। वह यह समझ ही नहीं पाया कि असली इज्जत तो चरित्र और मेहनत से मिलती है, घमंड और चालाकी से नहीं। धीरे धीरे उसकी पढ़ाई में लापरवाही उसके अंकों में दिखने लगी। जो बच्चा कभी तेज था अब मामूली टेस्ट भी पास करने में जूझ रहा था। उसकी रिपोर्ट कार्ड लाल स्याही से भरी होती, लेकिन वह उन्हें छुपाने में माहिर हो गया था। अगर छुपा नहीं सकता तो अपने पिता के सिग्नेचर की नकल कर लेता या कहता कि शिक्षक को उससे कोई निजी शिकायत है। और उसके माता पिता हमेशा अपने आदर्श बेटे पर भरोसा करने वाले उसकी बातों को सच मान लेते। शायद टीचर ही ज्यादा सख्त है। श्रीमती शर्मा कहती, चिंता मत कर बेटा, तू समझदार है, सब ठीक हो जाएगा। वे यह नहीं देख पाए कि झूठ और चालाकी अब उसके स्वभाव का हिस्सा बनते जा रहे थे। घर पर उसकी मांगें और बढ़ गई थीं। उसे सबसे महंगे ब्रांडेड कपड़े चाहिए थे, नए गैजेट्स और दोस्तों से ज्यादा पॉकेट मनी चाहिए थी। उसे इस बात का कोई एहसास नहीं था कि उसके पिता ये सब देने के लिए कितनी कुर्बानियां करते हैं। उसे लगता यह उसका हक है। उसका कमरा हमेशा बिखरा रहता, दादा दादी से उसका व्यवहार अक्सर बेअदब होता और परिवार में उसकी भागीदारी केवल खाने के वक्त तक सीमित थी, जब वह अक्सर खाने की शिकायत करता था। रोहन एक ऐसे बुलबुले में जी रहा था जिसमें सिर्फ अपनी अहमियत थी और वह उन विनम्रता, जिम्मेदारी और कृतज्ञता के मूल्यों से पूरी तरह कट गया था जिन्हें उसके माता पिता अपनी जिंदगी में बहुत मानते थे। ये बिखराव धीरे धीरे हो रहा था, लेकिन उसका होना तय था। The bubble in which the Sharma family lived was destined to burst, and it did so on a cold December afternoon. I was at my office, trying to reconcile a difficult financial statement, when suddenly, I received an urgent call from Rohan's school. The principal himself was on the line, and let me tell you, his voice was stern and unequivocal. Mr. Sharma, he said, I need you and your wife to come to the school immediately. It is about Rohan. A knot of dread tightened in my stomach. I had received calls from teachers before, but a call from the principal was a different matter altogether.
I left work early, picked up a worried Mina from home, and together we rushed to the school, our minds racing with 1,000 fears. In the principal's office, the air was thick with tension. The principal, a seasoned educator with a kind but firm face, laid out Rohan's final examination report card on the table. It was a sea of red. Rohan had failed in 5 out of 7 subjects, but that was not all. The principal then produced a stack of complaint letters from various teachers, detailing Rohan's chronic indiscipline, his disruptive behavior in class, and his utter disrespect for authority. The final straw had been an incident where Rohan was caught cheating during his final math exam and had then brazenly lied about it, even trying to blame the student sitting next to him. It was, honestly, a comprehensive record of failure, not just academic but also moral. Mr. and Mrs. Sharma, the principal began, his voice laced with disappointment. Rohan is a bright boy. His initial records show so much promise. But over the past few years, his attitude has completely deteriorated. He has no sense of responsibility, no respect for rules, and no fear of consequences. He paused, letting his words sink in. We have given him multiple warnings, which I am now certain never reached you. This time, however, the school's disciplinary committee has decided to take a firm step. Rohan will have to repeat the year. This is his last chance. One more major complaint, and we will have to ask you to withdraw him from the school. The words hit Mina and me like a physical blow. Repeat the year? Expulsion? We stared at the report card, at the complaint letters, and then at each other. The image of our perfect, brilliant son shattered into a million pieces. For the first time, we could not make excuses. We could not blame the teachers or the school system. The evidence was overwhelming, laid bare on the principal's table. The shame and sorrow we felt were immense. As we walked out of the school, the silence in the car was heavier than any words could ever be. It was the day of reckoning, a painful but necessary confrontation with the truth we had avoided for far too long. The drive home was the quietest journey Mina and I had ever taken together. The usual chatter was replaced by a heavy, suffocating silence. Each of us was lost in our own thoughts, replaying the principal's words, seeing the red marks on the report card and feeling the crushing weight of our failure as parents. When we reached home, we saw Rohan playing cricket in the lane as if nothing had happened. He waved at us with a cheerful smile, completely oblivious to the storm that had just broken over our heads. That smile, which usually filled our hearts with joy, now pierced us with a sharp pang of guilt. We had created this world of ignorance for him. That evening, for the first time, the television remained off. The aroma of a special dinner did not fill the house. Mina and I sat in our living room, the untouched complaint letters spread on the coffee table between us. We talked for hours, our conversation punctuated by long silences and quiet tears. We retraced Rohan's entire childhood, from the first toy we bought to pacify a tantrum, to the latest lie we had chosen to believe. We finally saw the connection, the clear line that led from our excessive pampering to the boy who was now on the verge of being expelled from school. It was a bitter pill to swallow. "We did this, Mina," I said, my voice hoarse with emotion. "We thought we were loving him, but we were crippling him. We gave him everything he asked for, but never taught him the value of anything. We protected him from every small sadness, but left him unprepared for a real challenge." Mina nodded, wiping her tears with the end of her sari. "I remember my mother used to say, a plant needs not just water, but also the strong sun and wind to grow sturdy. We only gave him water, Suresh. We kept him in the shade for too long." It was a moment of profound and painful realization. Our love, in its purest form, had been misguided. The guilt was heavy, but beneath it a new sense of resolve began to form. It was not too late. Rohan was still young. The damage was significant, but it was not irreparable. We knew that the path ahead would be difficult. It would mean unlearning years of habits, for us as much as for Rohan. It would mean facing our son's anger and resistance, but we were his parents, and our true duty was not just to love him, but to guide him, to prepare him for life. That night, the Sharmas did not sleep much.
We were not just mourning our mistakes, we were planning a new beginning. It was the awakening we desperately needed. The next morning marked the beginning of a new chapter in our household. After a long and difficult night, Mina and I were united in our purpose. We sat Rohan down, not with anger, but with a seriousness he had never seen in us before. We laid out his report card and the school's letters on the table. There was no shouting, no blaming. In a calm and firm voice, I explained the situation, the failure, the warning, and the consequences. For the first time, Rohan saw genuine pain and disappointment in our eyes. Not for the failure itself, but for the path of dishonesty he had taken. He had no excuse, no lie to offer. He simply sat there, head bowed in shame. Then, I announced the new rules. The list was long and non-negotiable. Rohan's pocket money was suspended indefinitely. His video game console and mobile phone were taken away, to be returned only for limited supervised periods on weekends, contingent on good behavior. A strict study schedule was put in place, 2 hours every evening, with no television or other distractions. I myself would sit with him and supervise his homework. Furthermore, Rohan was assigned household chores. He was now responsible for keeping his own room tidy, polishing his shoes, and helping his mother lay the table for dinner. The era of the little prince was officially over. As expected, Rohan's initial reaction was one of anger and rebellion. He threw tantrums, refused to eat, and accused us of being cruel and unfair. "All my friends have phones. You don't love me anymore," he would shout. In the past, these words would have melted our hearts and we would have given in. But this time, Mina and I stood firm. It was one of the hardest things we ever had to do. Hearing our beloved son cry and not rushing to comfort him with concessions felt unnatural, almost brutal. But we held on to our resolve, reminding each other that this tough love was the real medicine he needed, far more than the sweet poison of indulgence we had been feeding him for years. Slowly, very slowly, the resistance began to wane. The consistency of his parents was something Rohan could not fight. He realized that his tantrums no longer worked. The new rules were here to stay. With no gadgets to distract him, he began to feel the weight of boredom, which eventually pushed him toward his books. My patient presence during study time, initially a source of irritation, gradually became a source of support. He started completing his homework, not because he wanted to, but because there was no other option. The new dawn of discipline was harsh, but it was also steady, illuminating a path of responsibility that Rohan was being forced to walk, one reluctant step at a time. The transformation in Rohan was not instantaneous. It was a slow and gradual process, built day by day, choice by choice. The first few months were a silent battle of wills. But as the new routine became a habit, Rohan began to change. Doing his chores gave him a sense of contribution to the family. Keeping his room clean gave him a small sense of pride and ownership. Without the constant stimulation of video games and television, he started to rediscover other interests. He began to read storybooks from my old collection, and even started helping his grandmother in her small rooftop garden. He started talking to us, not just to make demands, but to share his day and listen to ours. Academically, the change was remarkable. With disciplined study hours and my guidance, Rohan began to understand subjects that he had previously dismissed as boring. He started asking questions in class and participating in discussions. His teachers noticed the shift in his attitude from arrogance to curiosity. He handed in his assignments on time, not perfectly at first, but with genuine effort. When the results of the midterm exams came, he had not topped the class, but he had passed in every subject with respectable marks. The smile on his face that day was not one of entitlement, but one of genuine achievement. He had earned it, and he knew it. By the end of the academic year, Rohan had not only cleared his exams with good grades, but had also earned back the respect of his teachers and peers. He was a different boy now, more responsible, more humble, and more appreciative of what he had. He understood the value of hard work and the satisfaction that comes from earning something through effort. He even apologized to the student he had wrongly blamed during the cheating incident, an act that took immense courage.
We gradually relaxed the rules, returning his phone and other privileges, but now Rohan used them responsibly. The trust that had been broken was slowly being rebuilt, stronger and on a more solid foundation. Our family found a new equilibrium. Our love for Rohan was as deep as ever, but it was now balanced with wisdom and foresight. We had learned the hard way that true love for a child is not about shielding them from all of life's difficulties. It is about equipping them with the strength, skills, and character to face those difficulties themselves. Pampering can provide temporary happiness, but discipline provides lifelong resilience. The story of my son became a quiet lesson in our neighborhood, a testament to the fact that while love is the soil in which a child grows, discipline and boundaries are the sunlight and water that help them grow strong, stand tall, and bear the sweet fruits of success.